Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Mohsen Anand Chaudhary. I'm here with a new lecture. In the previous lecture, we discussed about little, a little, and the little. But in today's lecture, we discuss few, a few, and the few. So, what is the difference among these three words? Like how we may use these three words? Like as I've told you in the previous one that little is used for uncountable things. In the same way, few is used for the countable things. Like when we use few, it means something that is countable. We'll be using few for that. Clear? So now use of few. As I told you in the previous lecture that little means very less quantity or amount, that is near to nothing. So in the same way here few means something is there but is somehow equal to nothing. Few. And very minimum use of few is somehow you will find here in English language. So a few, it means there is something like something countable, a little quantity. But a few, when we'll be using the things for the second time, then we'll be using the few. Like how? First of all, a few. For example, there are 60 students in the class because a few and the few will be used for countable things. 60 students can be counted. There are 60 students in the classroom and I want to separate a few students from those 60 students. So, for example, in rough estimation, I took like 15 to 20 students or maybe 10 to 15 students from that quantity, from this whole quantity. So, I'll be saying that, for example, from these 60, a few students are with me. In the simple words, like these are 60 students and I have taken attendance, and after attendance I found that 10 to 15 students are absent in today's lecture. So I'll be saying that a few students did not attend today's lecture. Means from 60, 10 to 15 would be a few for the first time. Clear? Then, when I'll be using those 10 to 15 students for the second time, then I'll be saying that the few students who were absent yesterday, like we have talked those a few students earlier, and now we'll be talking those a few students in the way like the few students who were absent like yesterday. Means, for example, this is 11/24, like 11th November 2024. I took an attendance, and after the attendance I found that 10 to 15 students are absent from the class. So what I'll do, I'll hold these students or this list in a separate way. Like I'll keep it in a separate way. After this lecture, in the very next day, on the very next lecture, I'll be saying that yesterday I took attendance and I found some students absent.
So I took those students in a separate way. So I'll be saying that the few students who were absent yesterday will be punished today. Will be punished today. Why? Because they were absent yesterday. So this is the use of few, a few and the few. इंतहाई सादा लफ्जों में अगर मैं इसको बयान करने की कोशिश करूं तो क्या है कि फ्यू, आ फ्यू और दी फ्यू जो है इनका इस्तेमाल जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था लिटिल, अ लिटिल और दी लिटिल। तो भाई साहब लिटिल जो है लिटिल, इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स, वो चीजें जो गिनी नहीं जा सकती उनके लिए लिटिल इस्तेमाल होता है। और फ्यू जो है ये इस्तेमाल होता है उन चीजों के लिए जो गिनी जा सकती। पहला मेन डिफरेंस तो दोनों में ये है, ये गिना नहीं जा सकता और ये गिना जा सकता है। क्लियर? फिर उसके बाद हम फ्यू की तरफ आते हैं। तो फ्यू का बड़ा थोड़ा, जैसे लिटिल का बहुत थोड़ा या ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है, यानी लिटिल मतलब ना होने के बराबर कोई चीज। इन द सेम वे फ्यू मीन्स कोई चीज बिल्कुल ना होने के बराबर है, जरूर लेकिन इंतहाई ना होने के बराबर। अब 60 में 1 या 2 का जिक्र करेंगे तो फिर इसका मतलब ना होने के बराबर। इसी तरह फिर क्या है कि जब आपके पास कोई फॉर एग्जांपल ये तो बड़ी कॉमन एग्जांपल मैंने कि 60 स्टूडेंट्स हैं, आपने अटेंडेंस ली, उसमें से 60 में से 5, 7, 10 या 15 के करीब एब्सेंट थे। तो आप क्या कहेंगे? आ फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। जब आप अटेंडेंस ले रहे हैं तो आपने कहा कि 60 में से 10 या 15 ये आ फ्यू स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको अलग कर लिया। अब वो जो अलग किए हुए स्टूडेंट हैं, जब वो उस 60 के हजूम में थे तब वहां से निकाले तो वो आ फ्यू थे, पहली दफा निकाले तो वो आ फ्यू थे, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जब दूसरी दफा आप उसका जिक्र करेंगे दूसरे तीसरे दिन या उसके बाद कभी भी, तो आप क्या जिक्र करेंगे कि द फ्यू स्टूडेंट्स, फिर वो आ फ्यू नहीं रहेंगे, फिर वो द हो जाएंगे, सॉरी दी फ्यू हो जाएंगे। दी फ्यू स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट अपना यस्टरडे विल बी पनिश्ड, कि उन्हें आज पनिश किया जाएगा। आई एम सॉरी कि ये मैं थोड़ा सा वो इसकी प्रोनाउंसिएशन में, दी की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मैं वो मतलब अनकॉन्शियसली थोड़ा कर जाता हूँ। जब इसके बाद THE जो आर्टिकल है इसके बाद जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उस वहां पे हम इसको दी के तौर पे यूज करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन दी करते हैं। जब इसके बाद कोई वॉल आता है तब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो दा की सूरत में करते हैं। अनकॉन्शियसली मैं अगर कर जाऊँ तो उसको काइंडली वो बेयर कीजिएगा। तो ये है आ फ्यू और दी फ्यू का इस्तेमाल, कि जैसे मैंने लास्ट में एग्जांपल दी थी कि आप कोई चीज, लास्ट में मैंने काउ की एग्जांपल दी थी। आप कोई चीज खरीदते हैं, आप कहते हैं I bought a pen। अब ये कॉमन नाउन है फ्रॉम द बाजार। अब कहेंगे जब दोबारा इसका जिक्र करेंगे, ये पहले आपने कहा आ पेन, फिर दोबारा जिक्र करेंगे ना कहीं भी, द पेन इज ऑफ ब्लैक कलर। अब आप उसका जिक्र कर रहे थे कलर का, यानी आपने उसका दोबारा जिक्र किया पेन का, तो फिर आपने द पेन यूज किया, हालांकि कॉमन था। यही फर्क है, सॉरी दी पेन आपने इसको यूज किया, यही फर्क है लिटिल में, सॉरी अपना दी लिटिल में और दी फ्यू में। यानी जब आप पहली दफा इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल चीज को तो वो आ लिटिल होगी, दोबारा इस्तेमाल करेंगे उसी चीज को, नाम दोबारा जिक्र करेंगे तो वो हो जाएगी दी लिटिल। इसी तरह काउंटेबल चीज को आप पहली दफा इस्तेमाल करेंगे, निकालेंगे कहीं से तो वो आ फ्यू होगी, दोबारा उसी का जिक्र करेंगे तो वो दी फ्यू हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।